Assalamu alaikum. My name is Komal Afzal and I am the student of MSc in Organic Chemistry. My presentation topic is determination of dissolved oxygen in water by Winkler's method. It's dissolved oxygen. Dissolved oxygen is the amount of gaseous oxygen present in the water in its dissolved state. It is the main or the most important indicator for the water community. That is, you have to find the dissolved oxygen more precisely in order to have the quality of water better. But if dissolved oxygen levels are too low, then some fish and other living organisms may not be able to survive. Let's discuss some basic points. As we know that many animals and plants or living organisms that lived under the water need dissolved oxygen for survival. Lack of oxygen can kill aquatic plants and animals. Measuring dissolved oxygen is probably the most significant water quality test, that you have to find the dissolved oxygen more precisely in order to have the quality of water better. Importance of dissolved oxygen in aquatic life. Dissolved oxygen is necessary to many aquatic animals and also for plants as they use oxygen in respiration. Microbes and fungi also require dissolved oxygen to decompose organic material at the bottom of our body of water. Uses of dissolved oxygen analysis to determine the health or the better quality of water. It is used to determine the amount of fresh water system that can support, also used to determine the amount of decomposition occurring in the lake or stream. Principles of Winkler's method, that is also known as volumetric method. It involves redox reaction. So basically इसमें ये होता है कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन होता है वो कंबाइन हो जाता है मैग्नीज के साथ. जब वो मैग्नीज के साथ कंबाइन होता है टू फॉर्म हायर हाइड्रोक्साइड्स, उसके बाद फिर उसको हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं टू लिबरेट द आयोडीन. वो जो आयोडीन लिबरेट होता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है ऑक्सीजन से जो कि डिजॉल्व है हमारे गिवन सैंपल ऑफ वाटर में. दिस आयोडीन इज टाइट्रेटेड by standard sodium thiosulfate using starch as an indicator. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्सीजन कंबाइन होता है मैग्नीज के साथ, फिर उसको हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं बिकॉज टू लिबरेट आयोडीन. जब आयोडीन लिबरेट हो जाता है तो वो आयोडीन को फिर टाइट्रेट करा दिया जाता है स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट के साथ बाय यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर. Dissolved oxygen measurement methods. There are three methods available for measuring dissolved oxygen concentrations in water. These are titration method, colorimetric method, optical or electrochemical sensor. So in this experiment, the method that we are following is titration method that involve redox reaction. In Winkler titration, these are the 9 steps for the analysis of sample. First of all, you should prepare water sample and then add manganese sulfate solution in it. Here, manganese act as a catalyst. Then add alkaline solution of potassium iodide to liberate iodine gas. In step number 4, allow the mixture to stand for 5 minutes. After that, add 5 to 10 ml of diluted sulfuric acid that provide acidic medium. Then keep the solution in dark for 10 minutes. After 10 minutes, the color of solution becomes brown. Then titrate that brown color solution with standardized sodium thiosulfate solution until the color of solution becomes pale yellow. After obtaining the pale yellow color, add a starch as an indicator in it. Then the color of solution becomes blue. Then again continue the titration until the blue color of the solution become discharge or disappear. The chemical reagents or materials that required in this experiment to perform are water sample, sodium thiosulfate of 0.025 molar concentration, potassium dichromate 0.004 molar concentration, then narrow mouth 250 ml BOD bottles required होंगी. उसके बाद diluted sulfuric acid required होगा of 5 molar concentration, then starch as an indicator, manganese sulfate solution of 2 molar concentration, and alkaline potassium iodide solution is also required as an reagent in this experiment. Procedure. As you already know that we have discussed all the steps that have included in this experiment briefly in the above slide. So सारे steps वही होंगे. सबसे पहले वो standardization करेंगे and then after that analysis of sample होगा and then सारे वही steps follow होंगे जो अभी ऊपर discuss किए हैं briefly in this iodometric titration.
केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले हमने स्टैंडर्डाइजेशन की थी सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन की विद स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। सो जो रिएजेंट्स हमने ऐड किए वो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड HCl था। उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl का मोल रेशियो 1:1 है। उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज़ यूज्ड एज एन प्राइमरी रिएजेंट एट आयनाइज इनटू पोटेशियम आइंस एंड दैट एंड क्रोमेट आइंस। अभी जो क्रोमेट आइंस आए हैं ये फर्दर रिड्यूस होंगे क्रोमियम आइंस के अंदर। एंड देन पोटेशियम आयोडाइड जो कि हमने ऐड किया फॉर द लिबरेशन ऑफ आयोडीन। देन पोटेशियम आयोडाइड जो है वो पहले आयनाइज होगा पोटेशियम एंड आयोडाइड आइंस में, और ये जो आयोडाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडीन के अंदर, जो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट में रिक्वायर है। So after oxidation of iodide into iodine, balance the number of electrons. After balancing the number of electrons, net equation we have obtained. And then sodium thiosulfate in aqueous solution, it ionizes. Sodium thiosulfate ionizes into sodium ions and thiosulfate ions. Then these thiosulfate ions oxidize into tetrathionate ions. And then iodine that is liberated is reduced into iodide. Then write down the net equation, and after that when starch is added then iodine starch complex बन जाएगा हमारे पास. So there is a redox reaction between thiosulfate and iodine starch complex. Iodine reduce into iodide and thiosulfate oxidize into thionate ions. Then in analysis of sample there is a reaction between manganese sulfate solution and a potassium iodide solution. Then manganese hydroxide फॉर्म होगा एंड पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होगा. देन ये जो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड आइंस हैं इनको फर्दर रिएक्ट करवाएंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन से, तो हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा प्रोडक्ट में. देन इस मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जिसको मैग्नाइट भी कहा जाता है इसको पोटेशियम आयोडाइड से एंड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाएगा. सो हमारे पास मैग्नीज हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होगा एंड ड्यू टू एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हमारे पास आयोडीन गैस जो है वो प्रोडक्ट में ऑब्टेन हो रही है. अभी जो आयोडीन गैस है इसको रिएक्ट करवा देंगे थायोसल्फेट आयन से, सो हमारे पास आयोडीन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा आयोडाइड में एंड थायोसल्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा टेट्राथायोनेट आयंस में. ऑब्जर्वेशन. सैम्पल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एंड देन सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करेंगे स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से. 10 ml स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लेंगे, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे 1 स्पैचुला, HCl ऐड करेंगे अबाउट 10 ml एंड देन पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे 1 स्पैचुला. आफ्टर द एडिशन ऑफ ऑल दैट थिंग्स जो है वो टाइट्रेशन करा देंगे सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से एंड 3 दफ़ा टाइट्रेशन कराएंगे और कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो है वो हम नोट डाउन कर लेंगे. जो यहाँ से रीडिंग आएगी ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन. देन एनालिसिस ऑफ सैम्पल में सैम्पल हमने प्रिपेयर किया 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, उसमें मैग्नीज सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे अबाउट 1 ml, पोटेशियम आयोडाइड अल्कलीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे अबाउट 3 ml, देन सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड 10 ml एंड स्टार्ट एज एन इंडिकेटर. उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन जो है उससे टाइट्रेट करा देंगे सैम्पल को और कंकॉर्डेंट रीडिंग नोट डाउन कर. कैलकुलेशंस में सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट की अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 एंड देन उस अमाउंट को रख कर अगेन रिकैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन दैट इज़ 4.8303 एक्सपोनेंट -3 मोलर. Okay, now calculate the amount of sodium thiosulfate of known concentration 0.025 molar by using molarity formula. After this, in standardization of sodium thiosulfate solution, we use standard potassium dichromate that is 1000 ml. Standard potassium dichromate solution इतने मोल कंटेन करता है तो 10 ml solution हमने लिया वो कितने कंटेन करेगा. देन मोल रेशियो लगाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम थायोसल्फेट का दैट इज़ 1:6 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो मोल्स आएंगे उसको, तो हमारे पास यहाँ से मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आ जाएगा. ये जो मोल आएंगे जो कॉन्कॉर्डेंट प्यूरेट रीडिंग आई होगी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन की, ये मोल कंटेन करेगी वो प्यूरेट रीडिंग. तो 1000 ml में कितने मोल्स होंगे हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा. देन इन एनालिसिस ऑफ सैम्पल विद स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के जो मोल आए हैं हमारे पास ऊपर 1000 ml में वो हैं 0.0301. तो जो प्यूरेट रीडिंग है सैम्पल की टाइट्रेशन करने के बाद उसमें कितने मोल होंगे 1000 से डिवाइड करके उस प्यूरेट रीडिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आ जाएगा. देन मोल रेशियो लगाएंगे थायोसल्फेट एंड O2 के बिटवीन 4:1 होता है. 1 को 4 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटेड मोल से, तो हमारे पास यहाँ से मोल आ जाएंगे O2 के. ये जो मोल आए हैं जो हमने 100 ml में सैम्पल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था ये उसके मोल आए हैं दैट इज़ 3.687 एक्सपोनेंट -5 मोल.
Now we have to calculate the mass of O2 in 100 ml sample solution by using the formula mole multiply molar mass. So the mass of O2 becomes 0.01179 gram per liter or gram per decimeter cube. In order to convert this gram per liter into ppm, multiply that amount by 1000. So the concentration of O2 become 11.79 ppm or milligram per liter. As we know that 1 ppm is equal to 1 milligram per liter. So report the result in ppm in such a way that the concentration of dissolved oxygen in 100 ml water sample is found to be 11.79 ppm or milligram per liter. At the end, I would like to thanks to all my respected teachers.